श्री किशन कपूर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 7वीं लोकसभा के सदस्य थे। उन्होंने ऊर्जा संबंधी संसदीय स्थायी समिति के सदस्य के रूप में अपनी सेवाएं दी। इससे पहले श्री कपूर 5 बार हिमाचल प्रदेश विधानसभा के सदस्य। We are in the upper house. Please, I would urge the leader of the house to see that they maintain decorum. Sorry, please maintain decorum. Honorable members, oath of affirmation is a constitutional prescription under Article 99 of the Constitution and is a solemn occasion. Deviation from the chosen format has potential to vitiate the oath. I urge the honorable members to conform to the chosen format. Oath or affirmation, Secretary General. आसाम श्री बीरेंद्र प्रसाद बैश्य। Honorable members, Shri Birendra Prasad Bash is a former Union Cabinet Minister for Steel and Mines. He is now beginning his 3rd term in this August House. He has held key leadership roles within his party and in National Sports Administration, including as President of Weightlifting Federation of India and Vice President of the Indian Olympic Association. Bash has also contributed regularly to journals and newspapers on socio-political issues and remains deeply engaged in political and social work in Assam. Shri Birendra Prasad Bash. মই শ্ৰী বীৰেন্দ্ৰ প্ৰসাদ বৈশ্যই ৰাজ্যসভাৰ সদস্য নিৰ্বাচিত হোৱাত ঈশ্বৰৰ নামত শপত কওঁ যে বিধিৰ দ্বাৰা স্থাপন কৰা ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰতি মই প্ৰকৃত নিষ্ঠা পোষণ কৰিম। মই ভাৰতৰ প্ৰভুত্ব আৰু অখণ্ডতা অক্ষুণ্ণ ৰাখিম আৰু মই গ্ৰহণ কৰিব ধৰা কৰ্তব্য শ্ৰদ্ধাপূৰ্বক নিৰ্বাহন কৰিম। बंगाल के जलपाईगुड़ी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 12वीं, 13वीं और 14वीं लोकसभा की सदस्य थी। श्रीमती सेन विभिन्न संसदीय समितियों की सदस्य रही। श्रीमती मीनाती सेन का निधन 3 मई 2025 को 81 वर्ष की आयु में कोलकाता, पश्चिम बंगाल में हुआ। With pictures in fact from proceedings in both the house, the leader of the opposition in Lok Sabha, Rahul Gandhi, is present. Also, Prime Minister Narendra Modi, who is the leader of the House in Lok Sabha, is there as well. The first day of the monsoon session of Parliament, a range of issues that will be raised by the opposition today is going to range from Operation Sindoor to the Pahalgam attack to what happened vis-a-vis the horrific crash involving Air India. Also, the Prime Minister has set the tone for this. In fact, welcoming the unity that was seen after the outreach during the outreach that was made after Operation Sindoor. He's spoken about unity. He's also spoken about the achievements of this government. Other than that, the Prime Minister has called for unity. The government has said that important legislative work is to be done. I'm going to go straight across to Mosmi Singh for more details on that big story. Mosmi, the stage has been set really for the opposition here, seeking answers from the government on a range of other issues like the Pahalgam attack, the crash involving Air India that has killed over 250 people, and many other issues that they will be seeking answers not just from the government but from the Prime Minister on, isn't it? Absolutely, you hit the nail on the head, Sneha, as far as you say, seeking answers from the Prime Minister is concerned. And with the Prime Minister's opening remarks appealing to the opposition to unite force with the government to run this session,
the first day is all said to be disruptive because the opposition knows that within 48 Back to hours. you. We're going Prime back to Minister the proceedings of the House right now. माननीय सदस्यगण, दिनांक 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम ये मॉनसून सत्र एक विजयोत्सव है। पूरी दुनिया ने भारत की सैन्य शक्ति का, भारत के सैन्य के सामर्थ्य का रूप देखा है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सेना ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था 100% अचीव किया। आतंकियों के आकाओं के घर में जाकर के 22 मिनट के भीतर भीतर ऑपरेशन सिंदूर के तहत उसको जमींदोज कर दिया गया। और मैंने बिहार की एक कार्यक्रम में इसकी घोषणा की थी, जो हमारी सैन्य शक्ति ने बहुत ही कम समय में सिद्ध करके दिखा दिया। और इसमें मेड इन इंडिया सैन्य शक्ति का ये नया स्वरूप, इस पर भी दुनिया बहुत आकर्षित हुई है। इन दिनों विश्व के जिन जिन लोगों से मिलना होता है तो भारत के इस मेड इन इंडिया जो औजार तैयार हो रहे हैं, उसके प्रति दुनिया का आकर्षण बढ़ रहा है। मुझे विश्वास है कि जब सदन इस विजयोत्सव को एक स्वर में विजय के भाव से